Good morning, children. Welcome back in your English class. And let's begin this wintry, cold day with fresh, positive thoughts. And children, you know already that winter has arrived. So take care of yourself and wear warm clothes and also please watch the video. Okay, so you know that we have started the chapter from a snapshot, that is the Ranga's marriage, and we have done in previous lecture we have done some explanation of the paragraphs. So in today's lecture also we will continue this chapter, and we will we will read the paragraph, and then we will continue the explanation of the chapter. So let's start the chapter. So children, in previous lecture we have studied up to the paragraph in which the author tells the readers about their special mango trees in the village, and also he tells the reader about the quality of mangoes of Hoshiali, and also he tells about the uh, other things, beautiful things in the village which are remarkable for author. And he also describes about the creeper growing in the pond and its flowers, and he tells that those flowers are very special. And also he tells about the if anyone wishes to see for himself or herself, one must contact him, and he will help them to reach there. And in the previous paragraph where we have left, that he feels that there is no better way to know a place than to visit it. So next paragraph is, when I'm going to tell you this is something that happened 10 years ago. We did not have many people who knew English. Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. What happened is disgraceful. Believe me, the other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" "For pies," she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. Now, in this chapter, the narrator then brings about a comparison as to how things were different 10 years ago when not many people knew or spoke English. Neither did people send their children to big cities like Bangalore to study. Back then, only the village accountant had the courage to send his son to Bangalore, and according to the author, those times were simpler. He justifies his claim by telling an accident where he was at Rama Rao's house, and they had just bought a bundle of firewood from an old lady. Then Rama told her to come next morning as he did not have any change at the moment. The poor old lady did not know what change meant. Then next morning, then the poor old lady did not know what change meant, and she went away whispering to herself. Neither did the narrator know its meaning. It was only when he went to Ranga's house then he told him. तो ऑथर इस पैराग्राफ में जो ये बता रहे हैं कि एक इंसिडेंट के बारे में रीडर्स को बता रहे हैं कि वो इंसिडेंट जो है वो 10 years ago जो हुआ था कि वो ऑथर कहते हैं और नरेटर कहते हैं रीडर से कि हमारे गांव में तब अंग्रेज़ी जानने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, और हमारे गांव का जो लेखाकार था, जो वो पहला व्यक्ति था, जो अकाउंटेंट था, वो पहला ही व्यक्ति था, पहला पर्सन था जिसने अपने मतलब सन को पढ़ने के लिए बैंगलोर भेजा,
और उसको इतना उसमें करेज था कि उसने अपने बेटे को या अपने सन को बैंगलोर भेजा। अब बात थोड़ी डिफरेंट है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं, और जब हॉलीडेज़ में आप उनको उनको इंग्लिश में बातचीत करते हुए सभी सड़क पर देखे जा सकते हैं। तो हम अब ऑथर कहते हैं कि हम उन दिनों इंग्लिश में बातचीत नहीं करते थे, और ना ही कन्नड़ में बातचीत करते समय अंग्रेज़ी या इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करते थे। तो वो कहते थे कि ऑथर यह कहते हैं कि बिलीव मी, जो इंसिडेंट हुआ वह बिल्कुल अजीब था, क्योंकि जब एक दिन क्या हुआ, उन्होंने इस चीज़ के बारे में कि उस वक्त जो उस टाइम में ऑथर कहते हैं कि उस टाइम जब रंगा जो है वो बैंगलोर स्टडी करने के गया था, तो लोग जो है आमतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलते थे और ना ही कन्नड़ में भी बातचीत करते थे। तो कभी कभी उनको एम्बैरस सा भी फील होता था, और इस एम्बैरसमेंट का वो एक एग्जांपल देते हैं, एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि एक दिन जब ऑथर रामा राव के मकान में गए, जो कि वहाँ पे गांव में, तो उन्होंने जलाने वाली लकड़ियों का एक बंडल जो है खोल दिया। तो रामा राव का जो सन था उसको पे करने के लिए वो बाहर आया। फिर उसने एक वुमेन से पूछा कि मैं तुमको कितना पैसा दूं। तो वुमेन ने यानी लेडी ने कहा कि 4 पैसे। तो जो बॉय था उसने उस वुमेन से कहा कि उसके पास तो चेंज नहीं है, और उससे अगले दिन उसे आने के लिए कहा। अब वुमेन जो थी उसने अंग्रेज़ी वर्ड चेंज का मतलब वो नहीं समझती थी, और मन में वो बिल्कुल अपने में विस्पर करते हुए वहाँ से चली गई। तो ऑथर बताना चाह रहे थे कि ऑथर भी उस वर्ड को नहीं जानते थे। बाद में जब वो रंगा के मकान पर गए और उनसे पूछा, तब उनके समझ में आया कि इस वर्ड का क्या मतलब है। सो what author is saying that, so the narrator brings about a comparison as to how things were different 10 years ago when not many people knew or spoke English. Now, next paragraph. This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing, "The accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems, and come, Ranga is here. Let's go and have a look." Attracted by a crowd, I too went and stood in a courtyard and asked, "Why have all these people come? There is no performing monkey here." A fellow without any brains said, loud enough to everyone to hear, "What are you doing here then?" A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. Now, in this paragraph, the author says that, however, 10 years ago, English was not commonly spoken in this village. And when the villagers came to know that Ranga, the accountant's son, was coming home from Bangalore, everyone got excited and rushed to his home to have a glance at him. And fascinated by all the crowd, the narrator too went there and asked people as to why they were gathered, because he could not see anything entertaining happening there like a monkey performing. Then a boy in the crowd, without brains and immaturely, shouted loud enough for everyone to hear, and in a crude way, he said to the narrator, "Then why are you standing here?" The narrator called him immature and he kept quiet. कहने का मतलब ये है बच्चों कि 10 साल पहले जब गांव में अंग्रेज़ी लैंग्वेज जो एक बहुत ही जैसे कहते वैल्यूएबल चीज़ मानी जाती थी इसको, तो वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। यही वजह थी कि रंगा का घर पर आना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, क्योंकि रंगा अंग्रेज़ी में पढ़कर बैंगलोर से पढ़कर आया था, और ही नोज़ इंग्लिश लैंग्वेज, और लोग इसलिए उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, और लोग ये डिक्लेयर करने के लिए दौड़ कर उसके दरवाजे पे आते थे, और ये कहते थे, वो कहते हुए चिल्लाते हुए आते थे कि अकाउंटेंट का सन या लेखाकार का जो सन है वो आ गया है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि लड़का जो बैंगलोर गया था पढ़ने के लिए अब वो आ गया है, तो चलो रंगा आ गया है और चलकर उसे देखें। तो भीड़ से फैसिनेट होकर, अट्रैक्टिव होकर जो है वो ऑथर भी वहाँ चले गए, और वो आंगन में खड़े हो गए और उन्हें पूछा कि सब लोग क्यों आए हैं,
और यहाँ कोई क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा कोई ऐसा तो मंकी का कोई डांस तो हो नहीं रहा है कि सब लोग उसको देखने आए हैं। तो उसमें से मतलब क्राउड में से एक बुद्धिहीन लड़का, जिसके जिसके कोई मतलब अभी भी उसको इतनी ज़्यादा वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था, उसके दिमाग नहीं था उसका, विदाउट ब्रेन विदाउट एनी थिंकिंग, उस लड़के ने इतनी ज़ोर से बोला कि सब लोग सुन सुन सके कि तब आप यहाँ क्या कर रहे हो। उसने बिल्कुल रूडली ऑथर से बोला कि, तो उसने रूडली ऑथर से कहा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो जब आपको कुछ पता ही नहीं है। तो वह एक लड़का था जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था और वो बिहेव करना भी नहीं जानता था, उसको बिहेव हाउ द पर्सन शुड बिहेव टू अदर्स, ही रियली डिड नॉट नो अबाउट दैट बिहेवियर। तो इन सब चीज़ों को सोचकर जो ऑथर ने कहा कि दीज गाइज ना, दीज विलेजर्स आर सो सिंपल एंड दे रियली डोंट नो हाउ टू बिहेव, दे रियली डोंट नो द एटिकेट्स। सो ये सब चीज़ें बातों को वो सोच कर वो चुप रहे। So, in next paragraph, seeing so many people there, Rangas came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would you have turned into what people call the black hole of Calcutta? Thank God it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. When he had first left our village, an old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Geneva is still there. He has not lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. Now, children, the word has come in paragraph Genevara. आप जनेऊ जिसको हिंदी में कहते हैं, and in Brahmin family, this Genevara in Kannada, it is known as a sacred थ्रेड वर्न बाय ब्राह्मण्स। आपने अक्सर आपने देखा होगा ब्राह्मण फैमिलीज़ में जो बॉय होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो जनेऊ पहनते हैं, एंड दैट इज़ द सेक्रेड थ्रेड। सो हियर इन दिस पैराग्राफ all the people were waiting outside Ranga's house because the place would look like the black hole of Calcutta. एंड मतलब जैसे लग रहा था कि कैलकटा का कोई ब्लैक होल है, या मतलब मे बी द ब्लैक होल वॉज सम प्लेस फाउंड इन कैलकटा। तो लोग जो है रंगा के हाउस के बाहर रंगा का ईगरली वेट कर रहे थे। एंड इफ़ दे ऑल वेंट इनसाइड, जैसे लग रहा कि मतलब सभी जल्दी से वो अंदर घर में चले जाओ और रंगा को सब देख लें। देन बाय सेइंग दिस द नरेटर मीन्स दैट by saying this statement, the narrator means that there were so many people that the house would have fallen short to accommodate them all. Thus Ranga came outside with a smile on his face, and everyone was so amazed to see that Ranga had not changed a bit after he left 6 months ago. Then among the crowd, from the crowd, an old lady even went to the extent of running her hands through his chest to check for a sacred thread, that is the Geneva. And however she went away after confirming that he had not forgotten about his caste. कहने का मतलब ये है बच्चों कि वहाँ पे जो है वो इतने लोगों को देखकर जो है वो रंगा जो है वो मुस्कुराता हुआ बाहर आया। और क्योंकि ऑथर कहते हैं कि यदि सभी लोग अंदर चले जाते तो वह जो प्लेस थी वो कैलकटा का एक ब्लैक होल यानी धक्का मुक्की वाला इलाका बन जाता, कि सभी बहुत ज़्यादा लोग छोटे से हाउस में ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा था और जगह यानी घर बहुत छोटा था, क्योंकि लोग बहुत सारे विलेजर्स जो रंगा को देखने आ गए थे। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ईश्वर को धन्यवाद है कि ऐसा नहीं हुआ, और हर पर्सन जो है ये देखकर बहुत ही अमेज्ड यानी आश्चर्य किया, बहुत हैरान थे कि रंगा वैसा ही है जैसा वो 6 साल पहले, यानी 6 साल जो है वो 6 मतलब वो इतना रंगा जो है वो जैसे 6 महीने पहले था वो आज भी वैसे ही है। तो और हमारे गांव से बाहर चला गया था। तो एक उसमें से एक ओल्ड लेडी जो है उसके पास खड़ी थी, उसने अपना हाथ जो है उसकी चेस्ट पर घुमाया और उसकी आंखों में देखकर कहा जेनेव अभी भी है, यानी शी कन्फर्म दैट कि ही हैड जेनेवर। तो उसने अपनी जाति नहीं बदली, मतलब उसने कहा कि या ही हैड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट। तो उसके बाद वो तुरंत चली गई और सब जाने के बाद रंगा लाफ्ड, रंगा को बहुत हंसी आई और रंगा ज़ोर से हंसा। Now in next paragraph, once they realized that Ganga still had the same hand, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. I continued to stand there. After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" It was only then that Ranga noticed me.
He came near me and did a namaskara respectfully, saying, I'm all right with your blessings. So, in this paragraph, once the villagers realized that Ganga did not change even after moving to the city, they disappeared as fast as a lump of sugar does in child's mouth. The narrator waited till the crowd cleared and asked him about his well-being. Then Ranga noticed him and replied with full respect in a traditional way, by paying namaskara to him. Then Ranga had not noticed the narrator in the crowd before that movement. यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब लोगों को ये लगा कि अब रंगा बिल्कुल रंगा के वही हाथ है, वही टांगे हैं, वही आँख है, वही नाक है, तो भीड़ ऐसे गायब हुई जैसे बच्चे के मुंह में मिठाई डाला और तुरंत मिठाई गायब हो जाती है। तो वहाँ पे ऑथर कह रहे थे, ऑथर ये कह रहा है कि मैं वहीं खड़ा रहा जब सब लोग चले गए। तब ऑथर ने पूछा, रंगप्पा हाउ आर यू, आप कैसे हो, क्या हर चीज़ आपके लिए ठीक है? तब यही तब की बात है जब रंगा ने मुझे देखा। जब ये क्वेश्चन ऑथर ने रंगा से पूछा तब रंगा ने ऑथर को नोटिस किया और वह मेरे पास आया और उसने बहुत ही नमस्कार करके आदरपूर्वक रिस्पेक्टफुली उसने नमस्कार किया और कहा, मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। Now, in this next paragraph, I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when he would be to his advantage to talk to someone and highly assist people worth. As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick, nor did he merely fold his hands. He went low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging few pleasantries, I left. Now, in this paragraph, the author tells about, or the author describes about the character of Ranga, that Ranga was very well behaved and well aware as to who could benefit him. He was one of those who could analyze someone's worth rightfully, and for how he greeted the narrator. He bent low and touched his feet, thereby seeking his blessings. It was not the present day namaskara where children would do it casually. It was a proper traditional one. Then the narrator blessed him that he might get married soon, and then he left. कहने का मतलब ये है बच्चों कि उन्होंने ऑथर ये कह रहा है कि रंगा के कैरेक्टर के बारे में इस पैराग्राफ में ऑथर ने बताया है कि वो कहते हैं कि मैं आपका ध्यान ऑथर अपने रीडर से कहते हैं कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ रंगा के कैरेक्टर की तरफ, कि वह जानते थे कि रंगा जानता है कि किसी से बात करना उसके लिए कब लाभदायक होगा और कब बेनिफिशियल होगा या बेनिफिट उसको होगा, और लोगों के जो वैल्यूज़ हैं, जो लोगों की जो वर्ड्स हैं, उसका वो अच्छे से इवैल्यूएशन करना भी वो जानता है। क्योंकि जब ऑथर कहते हैं कि उसने मुझे जो नमस्कार किया वो आज के लड़कों की तरह नहीं था, उसने सूर्य की तरह सिर उठाते बिना बेंट होकर उसने मतलब ये है कि जो आज के लड़के नमस्कार करते हैं बिल्कुल स्टिफ होकर, एकदम स्ट्रेट खड़े होकर, तो आजकल के लड़कों की तरह उसने मुझे नमस्कार नहीं किया जो कि जिसमें कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं रहता है। तो उसने कहा कि उसने अपने शरीर को एक जैसे उसने केवल अपने हाथ ही नहीं जोड़े बल्कि उसने मेरे पैर छूने के लिए वो नीचे झुका, और जैसे आजकल के लड़के कैसे करते हैं, आजकल के ऑथर कहता है कि आजकल के जो लड़के होते हैं, बॉय होते हैं, वो बिल्कुल शरीर को स्ट्रेट करके झटका देकर और बिल्कुल घुमाने, जैसे मतलब छड़ी, जादू की छड़ी होती है, उसको ऐसे घुमा दो तो जिस तरीके मतलब वो मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है इनके रिस्पेक्ट देने में, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो किस तरह एड्रेस कर रहे हैं लोगों को। तो लेकिन यहाँ रंगा की बात अलग थी, क्योंकि रंगा न केवल उसने हाथ जोड़े बल्कि उसने ऑथर के पैर छूने के लिए वो नीचे झुका भी, और ऑथर ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि ईश्वर तुम्हारा यानी भगवान यानी गॉड तुम्हारा विवाह जल्दी कराए, यानी शादी जल्दी कराए। तो हम कह सकते हैं कि कुल अगर इस तरह से कुछ अपने एक प्लेजेंट्री मोमेंट शेयर करके वहाँ से वो ऑथर चले गए। सो इन दिस पैराग्राफ द ऑथर ड्रॉज In this paragraph, the author draws the attention of the readers towards the Ranga's character.
So children, we will stop here today, and in next lecture I will continue this chapter also. So then please watch the video, and please read your book also. So we will stop here, and in next lecture we will continue this chapter. So take care of yourself and be happy, and please watch the video. And as you know that winter has arrived, so please wear warm clothes, and take care of yourself. So goodbye.